एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाईली पोलराइज्ड। इसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि आपकी जो वाटर है उसकी जो है वो बॉन्डिंग एबिलिटी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑन ऑक्सीजन आइटम आर अट्रैक्टेड टू द your partially positive hydrogen in nearby water molecules each इसमें क्या होता है कि आपका एक जो है वो each water molecule can form a total hydrogen 4 hydrogen bonds ना आपके एक जो है वो molecule 4 bonds बना सकता है easily। आपका कैपेबिलिटी है ये आपके वाटर की जो एक तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया और इसी वजह से जो है ना ये गुड सॉल्वेंट भी होता है इसी एबिलिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है। ओके ये बेसिकली बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है दैट अगर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उसकी जो लोन पेयर जो है वो उनके अट्रैक्शन होती है और वो उस वजह से जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो है ये बॉन्ड बनते हैं, इनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। Okay, there are two types of water discussed in this chapter, that is soft water and hard water. As the name shows that soft terms जो है ना soft और hard इसलिए रखे गए हैं, that is because of your mineral content के ऊपर अगर बात की जाए तो आपका hard water जो है उसकी जो है mineral content ज़्यादा होता है और आपका जो soft है उसका जो mineral content है वो कम होता है। आपका hard water is the water with excess calcium and magnesium, while soft water is free from these harsh minerals that can damage your home and body. Okay. टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ योर वाटर, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में आपके पास दो तरह की हार्डनेस आ जाती है, दैट इज टेम्पररी हार्डनेस एंड द परमानेंट हार्डनेस। ओके, sea and oceans are the sources of hard water and there are the two types of hard water, temporary hardness of the water and the permanent hardness of the water. Basically what is temporary hardness? Temporary hardness is caused by the excess amount of dissolved salt of calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. ये दोनों जो है ना वो temporary hardness में आते हैं, that can be removed easily by the boiling of water. And on the other hand, permanent hardness is due to the presence of chlorides of sulfates and क्लोराइड सल्फेट्स एंड मैग्नीशियम कैल्शियम, इन सब की वजह से जो है परमानेंट हार्डनेस होती है एंड दैट कैन नॉट बी रिमूव विद द बॉइलिंग प्रोसेस एंड हार्डनेस रिमूवल इज़ एक्सपेंसिव इन दिस, आपकी जो है बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है एंड द although hardness of water is never present in the form of calcium carbonate as it is insoluble in water, hardness of water is conveniently expressed in terms of equivalent of carbon, आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी जो प्रेजेंस की वजह से जो है ना हम वाटर की हार्डनेस को नहीं कहते, हमारे पास बाय कार्बोनेट्स अगर प्रेजेंस है तो उसको हम जो है हम कहेंगे कि ये हार्डनेस कॉज कर रहा है। ओके, methods for the removing hardness. Methods basically आपका water softening जो is a process that basically remove your ions of magnesium and calcium that cause your hardness. उसके लिए जो है वो removal of temporary अगर hardness की बात की जाए तो there are basically two methods that through which we can remove or you can say get rid of your hard water. That one is the boiling of water and boiling से क्या होता है with a temporary hardness that can be readily eliminated by the boiling and आपका boiling से जो है ये आप precipitate बन जाते हैं और आप उनको जो है वो remove कर सकते हैं। On the other hand, the Clerk method is the addition of slake lime in the chemical is a that is a chemical approach for the removing temporary hardness. आप क्या कर सकते हो, slake lime जो है वो treat करोगे किसके साथ, आप अपने हार्ड वाटर के साथ, तो देन यू विल फॉर्म इन द एंड आपका क्या हो जाएगा कि प्रेसिपिटेशन हो जाएगी मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस की और वाटर बिकम्स सॉफ्ट। Okay, removal of your permanent hardness. The chemicals, different chemicals are the only way to get rid of the permanent hardness. आपका chemicals के through ही जो है वो permanent hardness आप remove कर सकते हो, like your washing soda, sodium zeolite, remove calcium and magnesium as insoluble salts. आपका using washing soda क्या होता है, washing soda से जो है वो आप when you are adding your washing soda in the hard water that form a compound that is known as magnesium magnesium bicarbonate and calcium bicarbonate, कार्बोनेट्स बना लेते हैं वो और प्रेसिपिटेशन हो जाती है, इस वजह से जो है वो आपकी परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाती है।
डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर हार्डनेस, आपके जो हार्ड वाटर के जो है ना बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. दे आर enlisted here. The number one is lather formation, and when you wash your clothing in hard water, the soap generates a white precipitate instead of lather. The scum is a white precipitate. Without the development of lather, your garments will not be cleaned. And stains, अगर आप बात की जाए, hard water leaves stains on your clothes, किचन वेयर एंड वाटर मार्क्स. आप जो भी पानी आप हार्ड वाटर यूज़ करते हो, तो जो भी चीज़ें आप धोते हो यूज़ करते हो, बाथ टाइल्स हो गए, ग्लास हो गए, तो इन पे जो है वो आपके सारे निशान रह जाते हैं. Effect on hairs, if you continue to wash your hair with the hard water, you will continue to have an awful hair, and your hair becomes dry, scratchy whenever you wash with it with the hard water. आपके बाल ख़राब होना शुरू हो जाएंगे. Effect on the skin, bathing in with the hard water cause your skin to become dry and irritated. And reduce the life appliances, जो आपकी रियल लाइफ अप्लाइंसेस जो आपने यूज़ करनी है, हाउस होल्ड इक्विपमेंट जितने भी आपने यूज़ करने हैं, वो अगर आपके लाइफ स्पैन के लिए हैं तो ड्रामेटिकली जो है वो रिड्यूस हो जाएगा उसका लाइफ स्पैन. And it will only last for a few years, and that's how much hard water degrades your appliances. Corrosion of pipes में क्या होता है कि आपके हार्ड वाटर डिपॉजिटेड में आपकी corrosion होती है पाइप्स की, आपका जंग लगना शुरू हो जाता है. एंड एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन फ्लो थ्रू द पाइप इज लिमिटेड हो जाता है वो, क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह जमा होना शुरू हो जाते हैं. एंड इन द एंड and that cause metal to leak into the water and making it unsafe to drink. Water pollutants, अगर बात की जाए, the water pollutants are the polluting body that pollute your water bodies. The polluting of the water body is known as water pollution. And आपके जो lakes, rivers, oceans and ground water है, अगर आप उनको गंदा कर रहे हैं, pollutant directly dump or directly or indirectly dump कर रहे हैं the water body without the proper treatment to eliminate dangerous substance, that will result in your water pollution. Okay, there are basically three types of water pollutant that the three types of processes that basically pollute your water. Number one is your industrial, number two is your household, number three is your agriculture waste. Now we will discuss the industrial waste. As we know that industrial units are erected to create a needed substance on a commercial scale, however, industrial units sadly release their waste into the open land or in waterways. आपका जो industries हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ये चीज़ें जो है वो ज़मीन पर या पानी में डाल देते हैं, जो भी उनके केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं आपकी इंडस्ट्री में. And that degrade the quality of your water, and they lower the amount of dissolved oxygen in the water that impact your aquatic life and ecosystem. Heavy metals such as calcium, lead and mercury are harmful. You can say that mercury toxicity इतनी ज़्यादा होती है that can damage your nervous system. So it's so hazardous for the health. Household waste is also known as domestic waste or residential waste is disposable material. जो आप घर से जो है वो आप चीज़ें निकाल रहे हो, wide range of dissolved and suspended pollutants होते हैं उसमें. domestic waste में आपकी vegetable waste हो गया, rubbish हो गए, cans, bottle, chemicals, so washing powders and all these items, and it has a disease causing bacteria in it also, and all these things pollute your water. Agriculture waste is unwanted material that is produced in the agriculture. आपकी जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, उनको जो है हम कहते हैं कि ये जो है जैसे फर्टिलाइज़र्स हो गए, वो भी काफ़ी सारे केमिकल्स हो गए. आपकी जो भी चीज़ें बेसिकली आपकी एग्रीकल्चर में बनती हैं, स्टैम्स, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनको हम एग्रीकल्चर वेस्ट कहेंगे कि वहाँ से जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. एग्रीकल्चर प्रोसेस के थ्रू जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ें रह जाती हैं तो वो उनको जो है हम एग्रीकल्चर वेस्ट कहेंगे. वाटर बॉर्न डिजीज़ अगर बात की जाए तो वाटर बॉर्न डिजीज़ आर द डिजीज़ that is spread by drinking dirty water or eating your food prepared with the polluted water. एंड उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स भी होते हैं और बैक्टीरिया भी होते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं. And the following are the list of your most frequent illness: diarrheal diseases, dysentery, fluorosis, hepatitis, hookworm, typhoid, jaundice, cryptosporidium. These all are the your waterborne diseases. पानी से जो हो रही हैं, diarrheal हो गई, most जो आपकी lethal one is your cholera and typhoid. ये बहुत ज़्यादा जो है वो hepatitis, these are the most hazardous to the health.
you can prevent these